Today in this lesson, we are going to see selection statement. Selection statement क्या है? Selection of two paths. अब selection of two paths, like if your condition is true, then he's going to take another path, and if it falls, it's going to take another path. Just like taking an example. जब आपके पास स्क्रीन के ऊपर एक ऑप्शंस आती हैं, just like ATM machine. When you go to an ATM machine, आप pin enter करते हो, it gives you access granted or access denied. ठीक है? If your pin is correct, it is going to give you access granted. If your pin is incorrect, it is going to give you access denied. Right? इसी तरीके से जब आप मेन्यू ऑप्शन में आते हो, तो when you go into the menu option, आपके पास आता है transaction press 1, balance inquiry press 2 and so on furthermore. तो आप जो ऑप्शन क्लिक करते हो वो फर्दर उसी पाथ पे जाता है. Now, how these selections are being done? These are according to the structure of if condition, and there is another structure of case condition. Now, a pseudocode conditional statement. When different actions are performed by an algorithm according to the values of the variables, condition statement can be used to decide which action should be taken. Now, there are two types of conditional statement. A condition that can be true or false. It can use if, then, else, or and if. So if age is less than 18, then output child, else output adult. So this is also a simple example. Now, if condition, so if you go with the explanation of it, for an if condition, the then path is, for if condition, the then path is followed if the condition is true, and the else path is followed if the condition is false. There may or may not be an else path, right? So आप without else की भी condition use कर सकते हो, but you have to use this if condition, then else if the condition is false. So go state. Now, the end of the statement is shown by and if. So this is mandatory. If, then, and. This is mandatory. Now this else depends on the condition. Okay, आपकी condition requires else or not. Now there are different ways that an if condition can be set up. Use of Boolean भी use कर सकते हैं. That can have a true or false value. अब यहाँ पे एक concept आपने याद रखना है. If condition के साथ अभी we can use a variable to compare with a value. Just like child is it greater than 18? Okay, so this is what it's a variable and a value. If condition can be compared with the variable and a variable, हम variable to variable भी comparison कर सकते हैं. If condition can be compared with a Boolean value, Boolean variable. अब Boolean के लिए हमें ये comparison statement नहीं देनी पड़ती, क्योंकि Boolean की जो variable होता है, suppose if it's found, हमने Boolean as a Boolean type रखा है, तो by default it is false. अगर हम change नहीं कर रहे भाई, तो just write found. अब उसके लिए हमें comparison या कुछ true या वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है? So अगर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं if found then true statement else, उसकी else statement और and if लिख सकते हैं. So found is automatically it's itself a Boolean expression. ठीक है? If found then output this, else output this. तो इसमें we don't need to write is found is equal to true or if found is equal to false. हमें ये कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं होती. Getting the point? So if then statement in pseudocode, the if then construct is written as if Boolean expression. Boolean expression means your condition. You have to give your condition over here. This one is your condition. Or you can also say criteria. आपका condition भी हो सकता है, कोई criteria भी हो सकता है. If this condition or criteria, if it is true, so then it's going to take then path, और यहाँ पे आपकी जो भी statement of programming होगी उसको वो execute कर दे. And it's going to go with and if. That means your if condition is starting from here,
and it is ending over here. और इसके अंदर जो भी आपकी स्टेटमेंट होंगी वो आपकी if स्ट्रक्चर का पार्ट होंगी. ठीक है. So हम further we are going to look into it. If we go with Python के लिए हम if कंडीशन के लिए if स्मॉल के अंदर ही यूज करते हैं, उसकी एक्सप्रेशन या क्राइटेरिया देते हैं. Then option is not used. Pseudocode में we write then, but here we don't write then, we use colon sign. And if this condition is true, तो हम true statements देते हैं. ठीक है. And if Python में use नहीं होता, so and is not used in Python. Pseudocode में use होता है. VB.NET के अंदर भी it's just like pseudocode. If your expression or then if the expression is true, then it's going to follow this path, right? And if your condition is ending with end if state. Now let's take an example. If a program is very simple, you have to express if it is a positive number or it is a negative number. A user just input a value. Suppose we take a variable and we input x, right? So x variable having any number, कोई भी number हो सकता है उसके अंदर, 3, 5, 4, 20, -1, any number. Now your if condition starts from here, the first requirement, and it says the Boolean expression, your criteria. If x is less than 0, if it is less than 0, then your output is what? It's a negative number. And after that, your condition ends with end if. In Python, आप if condition लिखते हो in small with the Boolean expression, then की जगह colon and a bit of थोड़ा सा आप इसकी indentation करोगे. जब आप enter करोगे यहाँ पे, वहाँ पे indentation हो जाएगी और आप print negative कर सकते हो. ठीक है. अभी I'm going to show you how this is going to work in Python. VB.NET के अंदर भी if your condition, then your output command and end if. This is very simple. If your condition is true, just go with the condition, give your result and end the condition. It's very simple. But if your condition becomes false, अगर condition मेरी true नहीं है, false है, तो फिर मेरी if का structure, if statement का structure क्या होगा? Then you have to start with if. Give your criteria. If your criteria is true, your Boolean expression is true, it's going to follow the then path. Else, if your criteria or condition is false, it's going to go to else. और else के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग की स्टेटमेंट, ये सिंगल लाइन है या मल्टी लाइन्स हैं स्टेटमेंट्स की प्रोग्रामिंग की, उनको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद आपकी कंडीशन को एंड कर देगा. Repeating it again. If condition, which is mandatory, then is mandatory, else is mandatory, and end if is mandatory, right? If your expression is true, it's going to follow then path, then में आएगा और जो भी statements होंगी उनकी execute कर देगा. If your condition is false, is going to follow else पे, तो इसको skip कर देगा. It's going to skip these commands. ये मेरी condition, ये जो criteria है, यही अगर false हो जाती है तो ये वाली सारी कोडिंग को then को भी skip कर देगा, इसको भी skip कर देगा और directly jump कर देगा else पे. और else पे आके जो भी उसकी statement होगी उनको execute करेगा और मेरी के बाद उनकी एग्जीक्यूशन के बाद एंड इफ पे आ जाए. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा? अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो जाती है, इफ माय कंडीशन इज ट्रू, तो ट्रू पे इट्स गोइंग टू गो टू द देन पाथ, एग्जीक्यूट्स इट्स कमांड और उसके एग्जीक्यूशन के बाद डायरेक्टली एंड इफ पे जंप कर जाएगा. इट्स नॉट गोइंग टू गो टू एल्स, इसको स्किप कर देगा, इसको भी और इसकी स्टेटमेंट्स को. ठीक है. So the complete structure of if in pseudocode is, अगर हम pseudocode में इसका complete structure देखें, that will start with if, then all this structure are in capital letter. If you are working with pseudocode, if, then, else,
and at the end and if, ठीक? अगर हम एंड इफ नहीं देते तो योर प्रोग्राम वॉन्ट अंडरस्टैंड कि मेरा जितनी भी स्टेटमेंट है एंड इफ तो मेरा इफ कंडीशन खत्म कहाँ होगा, ठीक है, उसे नहीं पता लगेगा। लेकिन पाइथन बहुत ईजी हो जाए। पाइथन में जब आपकी अलाइनमेंट्स यूज हो रही होती हैं तो वो ऑटो खुद ही डिफाइन कर देता है कि मेरा यहाँ पे मेरी कंडीशन एंड इफ हो रही है, सो ओवर हियर इट इज गेटिंग एंड इफ। तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, वो इंडेंटेशन, ये जो आपकी इंडेंटेशन होती हैं, ये जो आपकी स्पेसेस होती हैं, वो खुद ही डिफाइन करता होगा, ठीक है। नाउ इन पाइथन अगर हम एल्स के साथ कंडीशन लिखते हैं तो कैसे होगा? इफ इट स्टार्ट विद इफ your criteria expression, then future when you are going to write column. If the condition is true, if this expression is true, it's going to go to this statement. If your condition is false, it's going to go to else. You have to give colon or else key statements. Agar ye false hai, if this is false, it's going to come to else. If this is true, it is going to come with over here. और इसकी इंडेंटेशन के अकॉर्डिंगली इट्स गोइंग टू गिव द स्टेटमेंट्स, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई दिस एग्जांपल जो अभी हमने किया। इफ योर नंबर इज लेस देन 0, इट्स गोइंग टू गिव अस अ वैल्यू नेगेटिव, or if this is greater than 0, then it's going to show us it's a positive number, right? So we are going to use this expression, this structure, if condition ka structure to use karta hai, theek hai? So first just we are going to write the pseudocode. So let me open a notepad, और उस नोटपैड पे हम पहले एक सूडो कोड करते हैं। So this is our notepad and let's open up Python editor too. Now let's write a pseudo code. Let's start with a declaration of a variable. हम proper काम करेंगे अपना, ठीक है। Declare, let's take a variable number colon as integer type. Nice. We don't need to initialize it because we have to take an as an input. So enter your number and let's give it. And after that, we'll start with an if condition. Now, what's the structure of if? Let's go with that. First, we have to write if, which is many different. Then we have to write the expression. Now, expression is your boolean. हम boolean expression के साथ देखेंगे. My variable is what? Number. Now, if it's said less than 0, then we are going to output what? The number is, if your condition is false, so then else output. Sorry, if it's your condition is true, then this is negative. Sorry for that. And if it is if the condition is false, then it will your number is positive, and your condition ends with end. Right? अब यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ इंडेंटेशन ताकि इजी हो जाए अंडरस्टैंड। Now look at over here. यहाँ पे अगर हम देखें, my if condition starts here, this is your boolean expression. If it is true, then it's going to follow then path. So if I enter a number like I entered -3, it's going to check if your variable is less than 0. Yes, it is less than 0, then it's going to go with then, and with then it's going to output this result. And after that, it's going to jump to your end condition and if condition, right? Now, if your condition is false, suppose I press 3 and my condition becomes false. This becomes false. So number is not less than 0.
it's going to go to else and execute it. Now there's only one statement, so it's going to go to that. Now let's take an example. अब जिसके अंदर we have multiple conditions, हमारे पास multiple conditions हो और multiple conditions के accordingly अगर हमें कोई result चाहिए होता है, then what to do? Suppose let's take an example. हम लेते हैं enter student marks. ठीक है, हमने स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करवाने हैं एंड इट्स फ्रॉम यूजर इनपुट करेगा. अब सपोज वो 76 कर रहा है, ये जो भी मार्क्स एंटर कर रहा है उसको अकॉर्डिंगली हमने ग्रेड दे रहे हैं एंड मार्क्स इज बिटवीन फ्रॉम 0 to 100. करेक्ट. Yes, अब sir. मार्क्स की रेंज क्या है? इफ इट इज फ्रॉम 90 to 100 इज गेटिंग A. इफ इट्स फ्रॉम 80 to 89 B. From 79 to 70 to 79 he's getting C, and from 60 to 69 he's going getting D, and from 50 to 59 he's getting E, right? And from 40 to 49 he's getting D, and if it's from range 0 to 39 he is getting U grade, ungraded. ठीक है. तो स्टूडेंट जो भी आप मार्क एंटर करो इट्स गोइंग टू आउटपुट एनी ग्रेड अकॉर्डिंग टू दीज क्राइटेरिया. अब हमें कुछ बुलियन एक्सप्रेशन इसके अकॉर्डिंगली बनाना है. नाउ हमारे पास कितनी आउटपुट्स हो रही हैं? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. हमारी 7 आउटपुट्स रिजल्ट्स हैं. अभी हमने जो इफ कंडीशन देखी थी, इफ कंडीशन में हमने 2 देखी थी आउटपुट, या देन में हो रही है या एल्स कंडीशन में हमारे पास आउटपुट हो रही है और उसके बाद एंड इफ हो रहा है. यही दो कंडीशन में हमारी आउटपुट आ रही थी, उसके अलावा तो नहीं. अब इतनी कंडीशन जब हमारे पास हो तो फिर हम क्या करते हैं? दैट इज नोन एज इफ, और यू कैन से नेस्टेड इफ कंडीशन भी हम इसे यूज कर सकते हैं, और वो ऑल्सो वी कैन से एल्स इफ कंडीशन भी हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन से इट्स अ नेस्टेड इफ और वी कैन से इट्स इफ. हाउ टू वर्क इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में कैसे होगा? आप फर्स्ट इफ which is mandatory, first expression, and then if this condition is true it's going to give you the output result. If this condition is false it's going to go with else. Okay, अब यहाँ पे क्या, if this condition is true तो वो तो then के path को follow कर लेगा. If the condition is false so these all requirement in is it's in false statement, और उसके बाद वो कहाँ जाएगा? एंड इफ पे चला जाएगा. अब हमारे पास इतनी मल्टी कंडीशंस हों तो एक तो कंडीशन इधर आ गई हमारे पास. सेकंड हम क्या करते हैं, इफ अगर वो एल्स में जाता है तो हम वहां पे एक और कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे, वो भी इफ से स्टार्ट होगी और एंड इफ पे जाएगी, और इसकी भी एल्स होगी. अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो इसी एल्स के अंदर हम एक और इफ कंडीशन लगा सकते हैं, else if, and multiple else if conditions. Now how to work this type of structure? इस structure को हम कैसे यूज करेंगे according to nested. Nested simple example है, just like a nest. किसी bird का nest देखें आप, क्या होता है? एक outer layer and then you have internal layer, और उसके बाद फिर internal layers आपकी यूज हो रही होती है. ठीक है, just like a nest. Same, this is outer if, then it has an inner if, और उसके बाद फिर और भी inner ifs यूज हो सकते हैं, लेकिन इनकी हर एक की एंड इफ स्टेटमेंट अलग रहेगी. Let's start this pseudocode. Okay, now if we have entered our student marks, now first if says, let's leave that, if student marks is greater than 90, then if it is greater than 90 you are getting A star, A or A star, an A star. Else, अब else के स्टेटमेंट में हमें क्या है, क्योंकि हमारे पास और भी कंडीशन है. If you see over here we have multiple conditions. This is the first condition, 90 to 100.
So if student marks is greater than 90, he's getting A star. Else, अब else में तो मेरी false statement होनी चाहिए. अब false statement तो मेरी और कोई है नहीं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? I'm going to take another if and if. ठीक है, अब ये एंड इफ किसके अंदर आ रहा है? ये इस एल्स के पाथ को फॉलो कर रहा है, और इस क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो दैट मीन ये तो 90 मार्क्स के नहीं है, उसके और मार्क्स होंगे. तो इफ में यहाँ पे हम फिर एक और कंडीशन लगा रहे, स्टूडेंट मार्क क्या ग्रेटर देन 18, देन आउटपुट your grade is B. Else, now this else is from this if. Ye else, this and if. This if of this else, और उसका ये आपका and if आपका. ठीक है, तो if this condition is also not true, तो फिर वो कहाँ जाएगा? else में चला जाएगा. लेकिन else के अंदर हमें क्या है? We can have another if else and if. तो इस if की कंडीशन क्या हो जाएगी? Is student mark is greater than 70. ठीक है, तो देन इसकी आउटपुट आ जाएगी, आउटपुट 80 ग्रेड. राइट, नाउ एल्स अगर ये भी नहीं है तो फिर अब ये देख लो इंडेंटेशंस. These indentations is very important. ये बहुत जरूरी है इंडेंटेशंस. कैसे? इस इफ की ये एल्स है और ये एंड है, एल्स एंड. नाउ एल्स के अंदर एक दिस इज इफ, then it else and it's ended. If this condition is also false, फिर आपके पास this is your if, then else. ठीक है, तो हर if की एंड if अलग सेपरेट आएगी. इसी तरह अब आप इसको फर्दर यू कैन कंप्लीट इट. ठीक है, अब इसके बाद else में एक और आपकी if कंडीशन आ जाएगी. Complete this. और फिर else में you will get another if. ठीक है, तो ये आपकी जो एक के साथ ठीक है. अब ये देखो, स्किपिंग चेक करो कैसे स्किप होगा. मैंने मार्क्स एंटर किए 7. दिस इज, लेट मी चेक, दिस इज 60. This is your plus is your D grade. अब चेक करो, suppose मैं I have entered a marks and these marks are 74 marks मैंने enter. तो जैसी फर्स्ट इफ कंडीशन में आएगा this becomes false because student marks is not greater than 90. It will jump to else, if else में आएगा, और else else की if में जाएगा. If this condition is true, अगर ये true है, true नहीं है, it is also false, it's going to jump to its else, और its else में फिर ये if condition पे आएगा. And now this condition, this is also false, तो वो कहाँ जाएगा? It will jump to this else, और यहाँ पे देखेगा, sorry, it is greater than this, sorry, it is true, this is true, so it is going to go and output this result. ठीक है, ग्रेड सी. एंड आफ्टर दैट इफ में नहीं, इस एल्स में नहीं जाएगा,
it will directly go to its end if. यहाँ पे end if पे आ जाएगा क्योंकि इस if का end if ये है, right? और इसके बाद its end if this one and this one and going to go out of the program. Got it? अगर मेरे marks 94 होते हैं तो if going to jump here, this becomes true, it's going to show you this output. Now will it go to else? Else में जाएगा? No, sir. Directly it will go to its end. उसे इसमें जाने की जरूरत नहीं. It's going to skip all this code. Correct? And if my marks is 64, it will go to this. This is false. It's going to go to else. Check if. This is also false. It's going to go else. Check this. This is also false. It's going to go directly to else. And inside else is going to, this is true. And it's going to output this result. And after outputting, it will go to end if of this if. And after that, end if, end if, and out. Got it? Yes, sir. Okay. Now you have to complete this code. This is your task. आपने मुझे ये टास्क कंप्लीट करके देना है. ये पूरे, दिस इज द रिक्वायरमेंट. 90, 80, 70, 60 हो गया, 50, 40 एंड 0. इफ इट इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 है तो मुझे ये ग्रेड, राइट? फिर नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट लेसन आई एम गोइंग टू गो विद ऑपरेशन कोड्स, जिसके हम लिमिटेशंस देखेंगे. अब यहाँ पे एक हमें प्रॉब्लम आएगी. वो प्रॉब्लम क्या है, वो नेक्स्ट सेशन में करूंगा. अभी जस्ट टेक इट एज एन लिमिटेशन कोड के आप जो भी मार्क्स एंटर करो वो 0 से 100 की रेंज में ही एंटर कर रहे हो. ठीक है? तो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे अगर मार्क्स इससे कम होते हैं, 0 से कम, या मार्क्स 100 से ज्यादा होते हैं, तो फिर तो ग्रेडिंग नहीं आनी चाहिए. तो वो हम नेक्स्ट लेवल में देखेंगे. ना तुम ट्राई टू कंप्लीट दिस. इसको सूडो कोड और पाइथन कोड में कंप्लीट करके देना. Okay, sir. ठीक है? पाइथन कोड इजी है. पाइथन कोड में आपकी एंड इफ्स तो लगेंगी नहीं. ठीक है? तो यू डोंट नीड एंड इफ. आपकी ये एंड इफ नहीं लगेंगी. लेकिन ये इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली खुद ही जब आप एंटर करते रहोगे, वो इंडेंटेशन में खुद ही वो करना जाएगा. दिस इज नॉट क्वाइट. देन की जगह कॉलन आ जाएगा और एल्स के बाद भी कॉलन आ जाएगा. ठीक है? इधर भी कॉलन आ जाएगा, इधर भी कॉलन आ जाएगा. ठीक है? इधर भी कॉलन, एल्स में भी कॉलन आ जाएगा. ठीक है? यहाँ पे एंड इफ रिक्वायर्ड है, तो इंडेंटेशन हर एल्स की ऑटोमेटिकली जनरेट करता है. Now if you look into this, now this is a syntax of your Python code. Now we can use nested if using an if condition and inside else, and else with then inside if. We can also use it in the short form in one if condition, and it can be used like if, elif, and then else. This is same like one if condition. If your condition in pseudocode is just like this, if you look over here, you declare a number, enter a number as an input. Now, if your number is less than 0, then your output is negative number. Else, now inside else, this is another condition which is a nested if. Now, if number is equal to 0, then it's going to represent it's a 0 number. Now, if it's not 0, then it's going to go with its else and it show as a positive number, because if it's not 0, less than 0, if it's not equal to 0, then the number is positive. In pseudocode, we can also represent it like that, else in just one if condition, if it's not nested. So we can write else if too. Now, this shows that if your condition is less than 0, and it's going to show you this output result as a negative number, and after that, if it's going to jump to your end if. But the number it will become else if. If else if number is equal to 0, then number is 0. And if this is also not correct, then it's going to jump to else. In Python, we can use this in this condition if, elif, and else. Now, if you're not using this,
you can also write in a nested. That's also right. Right? You can use this too, but for that you need two AND-if statements, for the internal one and for the external one. Right? So you can either use elif or you can also use in pseudocode else if. But for else if, this you have multiple conditions you can write in this way. So you take right? So, but the keyword elif, an abbreviation of else if, this keyword must line up with the corresponding if, right? So this is a corresponding of this if condition. Now there can be as many if to this construct as required, and now it will depending on your condition. How many conditions do you have for one if, right? Like I give you an assignment in grade. Now in grade you have to see that it's B, C, D, and according to your criteria, that if it's 90 plus it's A and 80 plus it's B. Now you have many outputs for one condition for if. So you have to use else, or you can say else if, right? We are not using nested if, because in nested if, how many as conditions we are going to use, you have to use its end if too, right? So it's easy if you are using else. Now if you see this is the same thing represented and showed with the pseudocode. This also can be done in Python code. Now, this is a nested, right? Inside else you can use this, but you can also use elif, right? Now this is a part. Now this becomes a part of your one if condition, right? So you just have to correct the indentation. If not, your program will give an error. This will become one part of your if condition. So if this number is less than 0, it's going to output this result and it will jump to your end of the if condition. If this condition is not correct, it will check this condition according to elif, or you can say else if, and if it will jump to the end of the if condition. If this is not correct, this is also not correct, it will directly go to else and output the result, and here it will end the condition. Now, if we run this, enter a number. Suppose I have entered a number that is 0, and according to this, when you enter the number, it's going to check the first condition. If number is less than 0, no, it will go to else if. Yes, it's going to output the result. Number is 0, and it will jump to end of the statement. Now, if we run this again and we give a negative number, that's minus 45. First is going to check the first condition, number is less than 0, false, it will check an else if condition, is it 0, false, and it will jump to else and output the number. This number is negative, so if now if we enter a number like minus 45, so first number, if the condition is correct, it's a negative one, and jump to and if statement over here. So it's going to represent this, skip all this code, and it will jump over here. So it's a negative number. Now, if we give it a positive number, that is 45. Now, the first condition is false, second condition is false, it will directly go jump to else, and it's going to represent a positive number. I hope that's clear with else if condition 2, that how you can use Python code and pseudocode with else if condition 2. So if you are not writing nested if, you can also write a single if. For that, you don't need extra and ifs. So this will become a part of single if condition with multiple statements or multiple conditions, right? You can write if number, then else if number, if your condition, then next condition with else if, you have to write it then, and if you have other conditions, just need to add
else if. And you put criteria, then and else if. Your criteria, then, right? So you can add as many else if you want in one single if condition. That's all. That's all for now. Enjoy learning. Like, subscribe, share. Allah Hafiz.